जी, लाइव फ्रॉम। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल वी लाइव राइट नाउ ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ नेबलर। क्या हाल चाल है सर? जी अस्सलाम, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर करंट सिचुएशन पे थोड़ी सी बात करने के लिए आपको बुलाया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड व्हाट्स द फ्यूचर के अमेजोन के ऊपर किस तरह से सब लोग इसको लेके चलें कि क्या करंट प्रोडक्ट्स करें। एज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग व्हाट प्रोडक्ट्स शुड वी डू कीपिंग इन माइंड करंट सिचुएशन एंड 2020 में आगे जब चीज़ें बेहतर होती हैं तो व्हाट आर वी गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट हंटिंग, जिस तरह के इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट हुई हुई हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? सो सबसे पहले आई पोस्टेड अ वीडियो दिस मॉर्निंग एक्चुअली, बिकॉज हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि वर्ल्ड किस तरफ जा रही है। सो एज वी हैव सीन के दिस वायरस थिंग नॉट रियली द स्मॉल थिंग कि यार आज या नेक्स्ट वीक से हम लोग अब घर जाएंगे या ऑफिस जाएंगे तो उसके बाद थिंग्स विल बी बैक। इट विल नॉट लाइक दिस, इट विल टेक अ व्हाइल actually to build all of this. Or announced that the lockdown will remain until significant period. Means we don't know actually कि कब जो है लोग आएंगे. Right? So people will be prepared to work from home and all this. US we have seen it can go up to two. The point is that this is not really going to be ending so quickly. It is going to take a while. हमें देखना है कि because the trend is going to be more towards e-commerce, और e-commerce में क्या ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त लोग करेंगे, लोग buying to adopt what the world is adopting. इसी सिलसिले में obviously I posted something कि यार आप अगर देखें कौन सी categories जो हैं इस वक्त ये types हैं they are going or shifting towards. So we talked about lawn and gardens, right? So हर UK में या US में mainly हर बंदे के घर में rather than buying from outside because they don't know कि किस तरह से वहाँ पे use हो. Home fitness because gym में हजारों लोग आते हैं दिन में. We're not saying to target the bigger keyword. The keyword needs to be shorter and small. Sorry, it needs to be a long tail keyword because अगर आप इस वक्त जो so ये ही right time है basically actions and not just wait for the situation to become normal because obviously we pray world is shifting towards more साकिब साहब किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, आई थिंक इंटरनेट इशू। ही विल बी बैक। तो मेनली लेट्स टॉक अबाउट के उन्होंने क्या बात की। मेनली ही वाज टॉकिंग के क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोग पीपल आर स्टेइंग एट होम, दे नीड टू डू मेनली होम एक्सरसाइजेज। तो इस वक्त होम एक्सरसाइजेज पीपल आर नॉट गोइंग आउट, उस पे काफ़ी ज़्यादा सर्चेज हैं। सो डूइंग अ प्रोडक्ट मे बी इन अ कैटेगरी के विटामिन सी, जिस तरह लोग बहुत सर्च कर रहे हैं सप्लीमेंट्स, गोइंग इनटू दैट कैटेगरी। तो सर आर यू बैक? आप की वीडियो प्रॉब्ली नहीं आ रही बट आई थिंक अभी आ जाते हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम फॉर हिम टू बी बैक।
तो इस तरह के प्रोडक्ट्स करना कि जो कैटेगरी गेटेड है, जो सप्लीमेंट्स हैं, उस कैटेगरी में जाना एंड डूइंग products which are in high demand right now, and going forward people will be more hygienic, हाइजीन की तरफ ज़्यादा जा रहे होंगे और अपनी वायरसेस से लड़ने के लिए अपना इम्यून सिस्टम पीपल वुड बी डूइंग बेटर. So something on those lines. There's a comment, can't see the video. You can't see the whole video, मतलब सिर्फ आवाज आ रही है. अगर मुझे कमेंट कोई कर दे तो आई वुड. जी सर. जी, कैन यू सी मी? इंटरनेट आजकल सर इंटरनेट भी खराब हुआ हुआ है. जी जी, एक्चुअली हमारे घर में हर बंदा इज स्ट्रीमिंग एंड वाचिंग मूवीज एंड ऑल दैट, सो ड्रामे क्या देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द इंटरनेट कनेक्शन इज गेटिंग लॉस्ट, सो आई कांट से यार जी ना यूज करें तो क्या करें. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है. तो सर मतलब हाइजीन प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा करें, ऐसे प्रोडक्ट जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं. सो पीपल कमिंग आउट ऑफ दिस, तो वो ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम्स होंगे, पीपल विल बी सर्चिंग मोर अबाउट दो, सेल्स ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली गोइंग फॉर अ लॉन्गर टेल कीवर्ड, उन कीवर्ड्स पे जाना और टारगेट करना. Exactly, the main keywords remain as it is because वो आपका ultimate goal तो यही होगा कि main keywords को target करना, but actually we need to focus on those keywords जो कि long tail हैं और फिर actually taking towards against that. So this is the right time to actually launch those products और जिनकी इस वक्त trending factor जो है बड़ा आगे जाने वाला है, and that clearly shows with the indications which we are seeing. Yeah, exactly. Sir, let's move on to our second point, which is what if somebody says that I don't have money to do this business, yeah, I don't have enough funds to start. How would they begin? Yeah, how would you suggest they start their journey? So, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें जी कि वी आर सीइंग के जो लोग हैं वो हमें अक्सर आते हैं, जैसे हम श्योर आपके पास भी आते हैं ट्रेनिंग में कि मेरे पास पैसे नहीं, I don't have money to do this, but this is not the end of the world. We have created many success stories जो कि खालियात आए थे और आज वो कहाँ हैं. I'm sure we have seen कि इस वक्त इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनको हायर किया हुआ है. All they had is a skill. So आप एटलीस्ट इस ग्रुप में इतने बड़ा एसेट है. I hardly say there is any group exist in the world जहाँ पे इतनी फ्री इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है publicly. Most of the time, whenever you see, when the people who charge, if you see the biggest Amazon coaches who actually charge you $4,000 to $5,000 or $6,000 for their services, for trainings, just providing you the videos, and this information available for everyone. So take the benefit, ask questions जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा हो. And this is the right time. Means you can see the e-commerce is going to be the future. So utilize this group and then be active as much as we can. अगर just say I need a video for this to be posted, and then one of our mentors will just actually be adding a product again, a video against that. So it needs to make sure that we are active. If you don't ask, if you don't take help, then it's not going to work like this, and you'll continue to complain कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है. Skill set is actually really something we need to focus on. और हमें मतलब इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ask the information, learn from it. You can't afford it. We are launching video series. We'll talk about this. उसमें there shouldn't be any excuse कि मेरे पास पैसे नहीं है. Yeah, exactly. वैसे भी सर लोग ये परेशान है कि what is the future of online selling जिस तरह से, but they should think what is the future of brick and mortar physical stores. उनकी तो हालत और ज्यादा खराब है ना. So e-commerce तो people sitting at home just ordering online, rather compare it with the brick and mortar और फिर देखें लोग कि उनकी क्या situation है इस वक्त. जी एग्जैक्टली. मतलब इफ यू सी के जो अब आप खुद से देखें कि एक ऐसा कंट्री है यूएस, राइट, उसमें अभी अब स्टोर्स ओपन भी हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है, एंड देन पीपल विल स्टिल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर ई-कॉमर्स बिकॉज पीपल वुडंट हैव
believe the trust, wouldn't have the trust actually कि ये सब कुछ over हो जाएगा इतनी जल्दी, because जब डर बैठ जाता है, it takes a while. और जो mainly गोरे हैं and all those, it takes a while for them to come out of this scared zone which they are in. Even though there is a big debate कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, which we'll talk about later on, कि क्यों और कैसे हो. But the question is कि they have been put into the fear zone. और उनको हमने e-commerce facility obviously को utilize करना है उन लोगों ने. We are seeing Amazon is hiring like hundreds of thousands of new workers to support it. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो in-house storing है वो खत्म हो जाएगी. They will be there, but actually not as capacity as it's supposed to be before. So the trend will be shifting towards which I bet this is going to happen. Yeah. Thank you, sir. Let's move on to next point. Ke enabling video series, sir. A lot of questions popping up. Ke how will we get enabling video series EVS? जो किस तरह से लोग उसको ले सकते हैं, and how for bootcamp students, for group members, how people can get that? So basically ये जो videos हैं, these are mainly for the newbies. So अभी जैसे bootcamp students ये सारे जी मैं EMS कहूँ या मैं bootcamp के student, मुझे भी ये video मिला. Actually you have been already told about this. ये video लेने से it does not, the more content does not mean more action. इसको इस तरह से understand करें. It will make you confused. You have been given enough information जिससे आप मज़ीद actions ले सकें. और ये वही काम है, वही वीडियोस हैं जो वही वीडियोस में कंटेंट है जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है. ये मेनली फॉर द न्यूबीज, बेसिक्स के. कोई कह रहा है मुझे अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट करना है, we have provided information as much as we can in the group, but एक more systematic और modules wise videos जो के सिस्टम के साथ एक पूरी explanation दी हुई है इसमें. तो आपने कौन लोग ले सकते हैं, 3 तरह की हमने इसमें कैटेगरीज बनाई हैं. So the first one is the people who can actually cannot afford it, right? So we're saying for underprivileged people who can't afford it, if their salary is less than 30,000 rupees per month, they can just apply via enabler support and we will be giving them access free of cost. Second, the people who will be most active people in Amazon sellers in Pakistan, because we want to see you have eager to learn. अब जैसे कोई कहता है मैं कैसे एक्टिव हो सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है. But question is you should be asking questions. If you won't ask, then we more basically. We need to know you are actually taking interest and be the part of it. Third one is if someone says मेरे से नहीं चौंचले होते कि जी मैं मैसेज करूँ, मैं कमेंट करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, I have the money, and that is also we put very minimal fee which is $160. Yeah, you just pay and then take the videos and then learn whenever you like. So ये कुछ videos डिटेल्स में हैं, कुछ हाई लेवल हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिसमें आपको सारा एक पूरा हाई लेवल पता चल जाता है कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है. तो इसको we've already developed video modules जिसको we plan to launch in like 5 to 6 days, but people can start apply for it if they are interested, and it's going to be more systematic ways of learning things, and these videos will continue to actually get updated. It does not mean कि आज अगर आपने देख लिया तो it's done. It will continue to get updated because we're dealing with the 1 trillion worth marketplace. Yeah, exactly. So mainly we could say that people who are more engaging, who are more asking questions and eagerness जो दिखा रहे हैं, show करा रहे हैं, they will be getting the videos. Our main purpose is to spread out to all those people who are struggling to or who are eager to learn. Yeah, exactly. Matlab, we need you to show us that I am eager to learn, not just say that I need the video series access, because if video series access lene se, you won't just get it straight away. We need you to understand basics. Go to enablers.org/action, go to enablers.org/video, understand it. We see the things which have been put in place already, and then start asking basic questions. And once we see you have active and then taking actions, participation, then we start giving you more information and more help towards. So that's how the mindset we need in order for us to help further. Yeah, and sir, is there any criteria? How would we be choosing people who are most active? Or I remember you've
mentioned that in your post also while explaining enabling video series. There is a criteria that we will be picking up people. So how let the audience know how would we picking up who's most active, who has Most active means the people who are actually asking for an help, and then the people are helping each other basically. okay. So there are two categories: one who has the knowledge and one who does not have the knowledge. Who does not have the knowledge should be asking questions in the group to take or seek help from, and the Yeah. other one who are helping, we will further polish your skills to make sure you continue to help people. This is the whole mindset we need to have it. So that's the two categories of the people who will be active in the group. Okay, that's great, that's great. So सबको request है, please be active in the group to get enabling video series and to see how things are. मतलब उसके अंदर आप high level basic question जैसे साकिब भाई ने बताया कि you will be getting a lot of information in that. Sir, next question is what about boot camp starting from 21st April? So is it on schedule? Are we going to do it? How is it going to happen? क्या होने जा रहा है? जी, so basically our aim was कि हम तो हमेशा इसको face to face करते थे. We have even opened a new office in JLM recently. अब हम 9 शहरों में physically मौजूद हैं. तो हमारा aim यही है और रहेगा कि लोग face to face आकर इसकी training ले सके. So inshallah, hopefully by 21st of April things will be back to normal. अगर normal नहीं है, we will make sure you come or sit in a एक दूसरे से 3-4 फीट के फासले से बैठे हैं हमारे ऑफिस में और मास्क लेके सैनिटाइजर or something will have measurements in place and then we'll give you face-to-face trainings. And also the people who are not comfortable still, then online sessions will be happening as well. Or is boot camp is why this is so important, because इसमें actually we know that 2020-21 is the year of e-commerce and where people or world is shifting towards. So इसमें हम बहुत सारी चीजों को change भी करेंगे. Means we will not have the typical criterias कि इस तरह से product select करनी है, इस तरह से launch करनी है. Things will be changing, evolving based on the scenarios which we are in. So इसमें why it's very important for the people. मेरा एम तो यही था कि इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, बट द पीपल हु आर इनटू दिस स्टेज के दे जस्ट वांट अस टू स्टार्ट बिकॉज़ they really want to start this business and they need more of mentorship to do this. So we'll still be on, inshallah, we'll start on 21st of April in 9 cities of Pakistan, and also will be online as well via Zoom, like an overseas Pakistanis or whoever wants to join from anywhere in the world. So inshallah, this is still on track, and but this will be more robust and with a more enhanced version, something which we will start. Okay, that's great. So this is a good news. Okay, everybody waiting for FBA private label bootcamp. It will be starting from 21st April, inshallah, with more knowledge in it regarding what's going on. Current situation ke hisab se, we'll be delivering it, inshallah. Sir, what if somebody says that they have money? How they can continue doing it now? What's the aim for them in 2020 or 2021? So मतलब इसमें जैसे कुछ लोग हैं, मेरे पास पैसे हैं but I have no clue what's happening and how do I start all of this. We recently started Enablers Opportunity Club, जिसमें what we are doing is to taking one club to 100K, which means कि आप ऐसी products launch करने जा रहे हैं जिसका budget जो होगा वो $1 lakh होगा. मतलब $1 lakh होते हुए भी आप अगर कामयाबी नहीं कर सकते, then I don't know what else it would require. So that's why we're having a decent budget in place in order to take this account to the level like $500,000 or something in 1 to 2 years with the asset mindset, and then we are selling to cash out. So इसमें हमारी 2 classes हैं. एक class A है जिसमें if someone says I want to spend like $50,000 and then we another 50,000 and I'll bring the 100K, or 25,000 will have 4 people in it which will bring 100K as well. So इस तरह से हम इसको साथ लेकर चलेंगे and will be managed by very experienced mentors, these accounts, और मतलब
हम ही आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे एक पार्टनरशिप के. वी हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स फ्रॉम स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से. We're conducting interviews right now. Some of them have passed the interview. They've received our contracts as well, because it's all by the contract, and then sooner we will be starting few clubs with the minimum 100K investment. So if you have money and do not have time, then this is the best opportunity for you to utilize your money and then have the business mindset. Or if you want to learn it, then sure, why not? You continue to learn from us, and then we just take it forward against that, and we'll continue to make sure you are up to date and managing your accounts on your own with your own investment. But it's thing we should never hear that you don't know how to start from, because I think Enablers has given a platform जिसमें आप हर चीज की एक option मौजूद है. और if you not able to start in 2020, I don't know what else would you be waiting for in order to get this going. That's I was about to ask when contracts are happening. So in within a week, within a month, or कितनी देर में contracts people are waiting for it? So abhi March में almost finished. So we plan to sign contracts in April. Because some people wants to visit offices and then come physically to sign it. So that's why it's a bit of 1 or 2 weeks delay, but it's been has been sent across to the relevant people. So as soon as this offices gets open, the people will be coming in, because we want all those partners who will be partnering against this opportunity club to be at one place. If someone is in overseas, we will have a Skype call with them at the same time, so everyone knows who the partner will be against them. This is more of the same version like Enablers mentor support if you do not have money, but an opportunity club if you have money. But that's why we're combining these people into one pool, and then take things forward. Okay, that's great news. Inshallah, once offices are starting to open, if not, then on strike. Sir, lastly, very important thing, how do you see future of e-commerce? जिस तरह आपने, you've already explained a lot about it, कि people would be going from brick and mortar physical store towards e-commerce, but how do you see it more? कि e-commerce पे लोगों का क्यों इतना ज़्यादा रुझान होगा? Why do you say that? इसमें आप ये देखें कि एज वी टॉक्ड अबाउट कि इस वक्त वी नो कि आई होप आपको शोर इतना ज्यादा नहीं आ रहा होगा पीछे से. But it's all right. I know everybody is at home. बच्चे भी जो हैं वो स्कूलों से छुट्टियों पे हैं. बिल्कुल, तो वो इसके लिए अपॉलॉजी फॉर दैट. तो बेसिकली इसमें जो ई कॉमर्स ट्रेंड वी आर सीइंग के पहले ही हमने देखा था कि जो इस वक्त यूएस का जो ट्रेंड था, हर दो में से एक बंदा जो है 56% मार्केट शेयर था, दो में से एक बंदा अमेज़न पे बाय करता था इस सारे कोविड-19 कोरोना वायरस आने से पहले. बट व्हाट वी आर सीइंग कि अब जो होने वाला है, एज पर द लेटेस्ट सर्वे and the latest prediction from Money Insider, we have seen 1.65 people are going to buy from Amazon or online marketplace out of 2. Means आप देख लें कि 1.5 से भी ज़्यादा लोग इस वक्त अब e-commerce trend की तरफ जाने लगे हैं. 1.65, which is such a big number actually, कि लोग ट्रेंड होगा कि हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की जाए. So it's actually going to be going crazy. This is something which we see. कुछ जो product selection is very important. We don't want to select something जो कि travel related है, because people will not be traveling much in 2020. They will rather be focusing on those things which are more of essential items. So we need to avoid those categories. Just usually we used to say our travel category is pretty good, but now in 2000 we were not going to say travel category is good enough, because people will be avoiding that. So that's what we need to make sure कि हम product selection बड़े अच्छे तरीके से करें. Explain the people who wants to launch second product, they need to look at के क्या trend हो रहा है, क्या होने वाला है, etc. So इसमें we need to see which marketplace we go for. US, Europe, Germany, ये marketplaces, the
whole Italy is closed right now. Means कि Yeah. हमें देख Italy में क्या लोग order करेंगे. What would there be? Baby items. Like if you just look at the Pampers, just look at Pampers. कि कोई भी brand हो इस वक्त, they are actually getting sale. Obviously, it's a gated category, hygiene one, so you need to get ungated. So हमें अब ये नहीं सोचना कि ये gated category है. We need to think about okay, but no matter what, we will get this ungated. And Funnel Guru, such a great opportunity जो कि आपको बहुत ही थोड़े से पैसों में अनगेट कर देते हैं and then you are in. So इसमें इस तरह से हमें सोचना, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि किस मार्केट प्लेस, किस प्रोडक्ट्स में जाना है हमें, एंड देन क्या ट्रेंड होगा, और सारा वर्ल्ड जो है विल बी चेंजिंग टुवर्ड्स दैट. मतलब हार्डली देयर इज एनी कंट्री हु हैज नॉट बीन अफेक्टेड. सो सब लोगों को क्या चाहिए? ऑनलाइन ऑर्डरिंग, एंड दैट इज समथिंग वी लुक एट कि किस तरह से हम इस ट्रेंड का फायदा मे बी द राइट वर्ड बिकॉज द पीपल आर इन ट्रबल, बट एक्चुअली वी स्टिल नीड टू डू द बिजनेस एनीवे, एंड टू डू smarter way is the right time. How do we choose that, which products we need to take that? Exactly, how to become part of this rather than saying how to take opportunity out of it. Matlab, how to be part of e-commerce in 2020 or 2021 inshallah. Sir, thank you so much for coming on short notice or explain करना. inshallah as everybody know कि हम हर मंडे को लाइव सेशन करते हैं. we'll be coming, आप लोग we post it on Monday morning या संडे को हम पोस्ट करते हैं, and ask you all कि अपने questions लिखें और questions पूछा करें whenever you are watching live sessions. आप लोगों के लिए होते हैं, we are here for you guys. और इसमें कोई nobody has to pay anything, this is free on Facebook. Everybody is at home these days. आप और even we are not live, there is no harm in asking a question. There is no stupid question. आपको कोई भी क्वेश्चन आता है पूछा करें. देयर आर सो मेनी पीपल, मेंटर्स, सिटी लीड्स, एवरीबॉडी अवेलेबल इन द ग्रुप ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल द टाइम. अगर आपको कोई भी इस तरह की आती है. सर थैंक यू वंस अगेन इंशाल्लाह फॉर एक्सप्लेनिंग 2020 और 2021 का क्या फ्यूचर, हाउ द ई कॉमर्स विल बी. इंशाल्लाह बात होगी. थैंक यू सो मच सर. Thank you ji, thank you. Allah Hafiz. Take care.